हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पीयूष कुमार वर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, जो कि ये वीडियो का पार्ट 1 है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है फॉर दो एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एसआरबी नेट एग्जामिनेशन, और दो एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वनडे एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूजीसी नेट के हैं, मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि आपके जेएनयू एंट्रेंस के क्वेश्चंस हैं, मैंने वहाँ इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया है। और वेरियस जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस जो हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस हम आगे आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। So, what is Wildlife Protection Act? So, Wildlife Protection Act 1972 is an act of Parliament of India enacted for protection of plants and animal species, and it was enacted on 9 September 1972. फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 9 सितंबर 1972 को आया। ओके, इसको लागू किया गया। एंड अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या दिया गया है। जब आप ये नोटिफिकेशन पढ़ोगे, उसमें आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और एंसिलरी और इंसिडेंटल thereto, with a view to ensuring the ecological and environmental security of the country. So, the next point जो कि बहुत ज़्यादा important है, जब हम बात इस लेजिस्लेशन की करते हैं, ये लेजिस्लेशन जो है, ये जो एक रेजोल्यूशन था जो कि which was of the legislature of 11 states invoking Article 252। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि रिजोल्यूशन था वो 11 स्टेट्स का था और आर्टिकल 252 के अंतर्गत जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में, विच प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट टू पास अ कॉमन लॉ फॉर 2 or more states मेकिंग सच अ रिक्वेस्ट by a resolution of the state legislature. So, the act initially applied to only those state governments whose legislatures passed the requisite resolution under Article 252 of the Constitution, but was later extended to all the states through the Wildlife Protection Amendment Act 1991, and it was passed after subject was brought into the concurrent list. अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपको ये बात याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जब धारा 370 जो कि अब एब्रोगेट कर दी गई है, ये रिमूव हो चुकी है। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, पहले जो था ये जम्मू एंड कश्मीर को उस पर लागू नहीं होता था, पर अब ये पूरे भारत में जो भी आपके इंडियन टेरिटरीज़ हैं, चाहे वो यूटी हो या स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स एंड यूटी पे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब लागू होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि जब हम बात करते हैं इस एक्ट की, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एंड इट हैज़ 7 चैप्टर्स, 66 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल्स विच गिव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं जो वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट था 1991। इट प्रपोज टू प्रोहिबिट hunting of all wild animals other than vermin. The Wildlife Protection Act provides the protection of wild animals and birds, hunting of all wild animals other than vermin. So, the Wildlife Protection Act provides a integral effort, or we can say integral approach for the protection of wildlife.
And on 5th June 1972, if we talk about the history, how Wildlife Protection Act came into existence, so we talk about the UN Conference on Human Environment in Stockholm, which is in Sweden. So on 5th June 1972, because of this, World Environment Day is celebrated every year all over the world. So India took a big step enacting the Wildlife Protection Act in 1972. So that is why we can say, if you talk about the highlight point, so keep remember, Wildlife Protection Act 1972 does not fall within the jurisdiction of the National Green Tribunal. Appeals can be filed in the Supreme Court of India. ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत इसका जुरिडिक्शन नहीं आता. इसकी जो अपील से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हो. एंड बिफोर 1972 इंडिया हैड ओनली 5 designated national parks, but after the formation of Wildlife Protection Act 1972, so now today the current status of total national parks has been increased, and it has been right now 104 national parks according to 2018 data. So now friends, Schedule 1 and Part 2 of Schedule 2 provide absolute protection. Offences under this are prescribed the highest penalties. Species listed in Schedule 3 and Schedule 4 are also protected, but penalties are much lower. ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना है. एज वेल एज अगर हम बात करें शेड्यूल 5 की, सो इट इंक्लूड्स द एनिमल्स विच मे बी हंटेड, जैसे कि वर्मिन की हम बात करते थे. एंड द स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है. सो चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं. सो बहरहाल अभी तक के अमेंडमेंट्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1982 अमेंडमेंट, एज वेल एज 1991 1986 अमेंडमेंट, 1991 अमेंडमेंट, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड अमेंडमेंट है 1996 की अगर हम बात करें तो, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 1993, साथ ही साथ 2002 एंड 2006, जो कि ये सारे के सारे आपके अमेंडमेंट्स हैं. और ये अगर हम बात करें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि 2013 में जो कि प्रपोज था बाय द वे, बट राइट नाउ वी जस्ट कीप रिमेंबर दैट there are total 6 amendments have been made, okay, according to 2016 data. So now we talk about some definition. So wildlife protection act में जो आपका चैप्टर 1 है उसमें आपका डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें हम बात करते हैं कि एनिमल्स. सो एनिमल्स इंक्लूड एम्फीबियंस, बर्ड्स, एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स एंड देयर यंग, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इन cases of birds and reptiles their eggs. एंड सेकेंड डेफिनेशन जो की है एनिमल आर्टिकल, इसका मतलब होता है कि एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स अदर देन वर्मिन, एंड इंक्लूड्स एन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एनिमल हैज़ बीन यूज्ड एंड आइवरी imported into India, and an article made therefrom. Captive animals. Captive animals means any animal specified in Schedule 1, 2, 3 or 4 which is captured or kept or bird in captivity. And Chief Wildlife Warden. According to Wildlife Protection Act definition, it means the person appointment as such under Clause A
of subsection 1 of section 4. And habitat includes land, water, vegetation, which is the natural home of any wild animal. And hunting means it with grammatical variations and connate expressions include killing or poisoning of any wild animal or captive animal, and every attempt to do so. B. Capturing, coursing, snaying, trapping, driving, or battering any wild or captive animals, and every attempt to do so comes under hunting. As well as injuring or destroying or taking any part of body of any such animal, or in case of wild birds or reptiles, damaging the eggs of such birds or reptiles, or distributing the eggs or nests of such bird or reptiles. As well as, so these there are three types in hunting. Now next is land. So land includes canals, creeks, and other water channels, reservoir, rivers, streams, and lakes, whether artificial or natural. So it also involves marshes and wetlands, include boulders and rocks under the land definition. And other definition which is very important, that is the livestock, means farm animal, and include buffalo, bulls, bullocks, camel, cows, etc. As well as, so these animals is specified in schedule 1 to 5. Protected area, it means national parks, a sanctuary, a conservation reserve, a community reserve notified under section 18, 35, 60, as well as 36A and 36C of the Act. National park means area declared whether under section 35 or section 38, or deemed under subsection 3 of section 66 to be declared as national park. Reserve forest means the forest declared to be reserved by the state government under section of 20 of the Indian Forest Act 1927, 16 of 1967, or declared as such under any state act. Sanctuary means an area declared as sanctuary by notification under provision of chapter 4 of this act, and shall also include deemed sanctuary under subsection 4 of the section 66. And trophy means the whole or any part of captive animals or wild animal other than vermin which has been kept or preserved by any means, whether artificial or natural, and includes rug, skin, and specimens of such animals mounted in whole or in part through a process of taxidermy, and antler, bone, carapace, shell, horn, rhinoceros horn, hair, feather, nail, tooth, tusk, musk, eggs, nests, and honeybee comb, vermin. And let me tell you, a word that came earlier was vermin. Vermin means any wild animals specified in schedule 5th. So wild animal means any animals specified in schedule 1 to 4 and found in wild in nature. So wildlife includes any animal, aquatic or land vegetation which forms part of any habitat. And wildlife warden means the person appointed as such under class B of section A of section 4, as I have already discussed about this. And finally, zoo. Zoo means an establishment, whether stationary or mobile, where captive animals are kept for exhibition to public, and includes a circus and rescue centers, but does not include an establishment or licensed dealer in captive animals. So now generally if you talk about Wildlife Protection Act, so it
डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। फ्रेंड्स 5 प्रकार के जो है आपके प्रोटेक्टेड एरियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हैं, जो कि आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व्स आते हैं। एंड दिस इज अ नोट पॉइंट। जब हम बात करते हैं ना कि 1991 जो अमेंडमेंट एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट, तो उसमें जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स किल्ड और कैप्चर्ड, इसको ओमिट कर दिया गया। सो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स आउट ऑफ 6 शेड्यूल इफ यू टॉक अबाउट, तो शेड्यूल 1 एंड Part 2 of Schedule 2 provides absolute protection, and offences under this are prescribed the highest penalties, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। और अगर आप बात करें शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 की, तो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है, बट यहाँ पर एनिमल्स का जो कह सकते हैं पेनल्टीज है, इट इज़ वेरी वेरी लेस। बट शेड्यूल 5 की जो एनिमल्स हैं, जिसमें आपका जनरली जो है उसको हंट किया जा सकता है, जैसे कॉमन क्रॉ हुआ, फ्रूट बैट्स हुआ या माइस हुआ, रैट, इनको हम किल कर सकते हैं, ये अलाउ है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है ना, उसका परमिशन लेना ज़रूरी है। इन केस यदि कोई एनिमल बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा, अगर वो कह सकते हैं कि ह्यूमन जो सोसाइटी है में भी अगर लोगों के लिए वो खतरा बन रहा है, तो उस जानवर को किल किया जा सकता है। पर ऐसे केस में आपको वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, उसका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन जरूरी है, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट शेड्यूल 6, so schedule 6 contains the plant which are prohibited from cultivation and planting. These plants are as follow, like cycas, bede, moi, vanda, जो कि ब्लू वांडा जिसको हम बोलते हैं, कुट, लेडीज, स्लीपर ऑर्किड, पिक्चर प्लांट एंड रेड वांडा। सो ये ऐसे प्लांट हैं जो कि शेड्यूल 6 के अंतर्गत आते हैं और इनका कल्टीवेशन या कह सकते हैं कि प्लांटिंग प्रोहिबिटेड है। And finally, the state governments may by notification declare its intention to constitute any area or other than area comprised with any reserve forest or territorial waters as a sanctuary if it considers that such area is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or geological significance for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife or its environment. The boundary of the sanctuary will be fixed by the state government by a notification specifying the limits of the area which shall be comprised within the sanctuary, and declare that said area shall be sanctuary on and from such date as may be specified in the notification. So यहाँ पर स्टेट्स को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को, जहाँ पर वो क्या हो, एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल कह सकते हैं कि प्रेजेंसी हो, सो ऐसे एरिया को वो कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकती है बाई एन स्पेसिफिक नोटिफिकेशन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बट नाउ इट्स टाइम for the discussion of some previous year questions. So पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, which of the following plant species or plant listed under Schedule 6 of Wildlife Protection Act 1972 and prohibited from cultivation and planting. So ये आपका UGC नेट जुलाई 2019 में आया था क्वेश्चन। तो इसका एक जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बी, जो कि ब्लू वांडा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में ग्रांट परमिशन टू पब्लिक टू इंटर अ सेंचुरी अंडर सेक्शन 8. So correct option for this is answer B, section 28 of Wildlife Protection Act. And the next question, according to the Wildlife Protection Act 1972, permission for hunting of rogue animal which is dangerous to human life can be granted only by. So the correct option for this question is option number A, Chief Wildlife Warden. And the last question,
Under which section of Wildlife Protection Act 1972 state government can declare an area closed to hunting or specified for a specified period? So the correct option for this section number 37, option number B. So thanks for watching this video, friends.